We warmly welcome to this national seminar. Sir, thank you, sir, to be with us. So, at the same time, we have esteemed keynote speaker and resource person of the today's seminar, Professor Kalmucharan Sahu. You know, he is one of the veteran and renowned professor of Vishwabharati Santiniketan. Prior to that, he was in the Arunachal Pradesh Central University, Rajiv Gandhi University, as well as he was in the University of Lucknow, and he is also one of the reputed persons in the field of education. Sir, thank you for giving your consent and to be with us. So, a warm welcome on behalf of the BG Department of Education and entire organizing committee and Fakir Mohun University to our university. So, we have with us Professor Bharat Kumar Panda, who is a very young and dynamic professor. You know that, and he was 5 and 6 years junior to me. He was from the same school where I have studied, and he has joined in the Central University of Koraput as a professor. Prior to that, he was in Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya, and before that, he was in Sanskrit National Sanskrit Institute Sansthan in Delhi. So he is one of the renowned and who is also proved himself as a Indian knowledge system, one of the best practices he has undergoing since his tenure in Indian knowledge system. Sir, welcome you to this our university, who is a very young and dynamic one. We have with us the organizing secretary, Professor Jyoti Shankar Pradhan, who is taking all the pains for conducting organizing this seminar, and welcome you to this seminar, today's seminar, Professor Jyoti Shankar Pradhan, who was former head and now currently also the professor of Department of Education of this university. We have with us Dr. Pratima Pradhan Madam, who is the coordinator of integrated B.Ed.M.Ed, and also she has organized many seminars and workshops previously. This time she is not organizing this one, but previously she has organized many in her best capacities. She is organizing, but she is also one of the member of organizing committee and also helped her hands for successful conduction of this seminar. Welcome you, madam, for this seminar. We have with us Joint Organizing Secretary Dr. Ranjan Kumar Rao, who is tirelessly doing efforts for this conducting and smooth organization of this seminar, 2 days seminar. So welcome you to this inaugural session. So apart from that, we have esteemed professors, that chairman, director College Development Council, Professor Agrawal, and Director IPSC, Professor Padhi, Director Student Welfare, Professor Niharanjan Das, and other senior professors and assistant professors, and delegates from different parts of the state as well as country. So a warm welcome for this 2 days seminar, and we have the research scholars from different institutions. So Fakir Mohun University as well as the organizing committee welcome you to this 2 days seminar. Apart from that, we have the students, participants and volunteers, PhD scholars, those who have also supported. So I welcome you to this seminar, and I hope this seminar theme is very pertinent as NEP 2020 focusing that Indian knowledge system. That Indian knowledge system, integrating Indian knowledge system not only in school education, across the discipline, that is in science, technology, higher education, school education and other allied subjects. So that in how to integrate and how to make the Indianization, that NEP 2020 focus on the Indianization and internationalization, that local to global, that we have to discuss. I hope the resource persons, the experts, those will be there today and tomorrow. They will have a collaboration and discourse to find out what are the outcomes of this seminar that will be helpful for integrating Indian knowledge system in the higher education and different innovations in Indian practices.
and Indian knowledge system that will be helpful to reach our objective of NEP 2020. So welcome you everyone, and also I welcome to the media persons, particularly our PRO madam and other journalism departments, the staffs of journalism department and students to this seminar, and the assistants, those who are present here. So welcome you one and all, and wish you a nice day and make the seminar successful and fruitful. Thank you everyone. We sincerely grace our gratitude to our organizing secretary, Professor Jyoti Shankar Pradhan, for transforming this academic idea into a meaningful scholarly platform. Now, I would like to invite organizing secretary, Professor Jyoti Shankar Pradhan sir, for welcome address. Bhaskar Behra, respected keynote speaker, Professor Kanucharan Sahu, Professor of Education, Department of Education, Vinay Logar, Santiniketan, Professor Bharat Kumar Panda, Professor and Head, Department of Education, Central University, Odisha, respected Head of Department and Convener of the seminar, Professor Amulya Kumar Acharya, and respected Coordinator, Integrated Graduate Program, Dr. Pratima Pradhan, respected all invited professors, heads, coordinators, and faculty members of different PG departments of our universities, valued participants of the seminars, media persons, and my dear learning students. A very good morning again to one and all. It gives me immense pleasure and privilege to extend a warm and cordial welcome to each one of you to this today's national seminar on Indian knowledge system and holistic education, policies, challenges, and opportunities organized by PG Department of Education, Fakir-e-Malal University. At the outset, I express my sincere gratitude to our esteemed Vice Chancellor, Professor Santosh Kumar Tripathi sir, for his constant encouragement, visionary and dynamic leadership, and generous support in organizing this event, this academic event. I also extend my heartfelt thanks to Professor Bhaskar Behra, Chairman, PG Council, for his valuable guidance and encouragement to organize this seminar. I would also like to acknowledge my gratitude to our esteemed guest, Professor Kanucharan Sahu sir and Professor Bharat Kumar Panda, for their kind consent and gracious presence in this today national seminar. In the 21st century, education is expected to move beyond pure academic achievements and focus on the holistic development of an individual. And the Indian knowledge system provides a rich intellectual heritage that integrates intellectual, emotional, ethical, social, and spiritual dimensions of the learning. And by integrating this knowledge, this traditional knowledge, with the modern educational practices, we can create a more value-based, inclusive, and sustainable education system in our country. And this seminar aims to provide a vibrant academic platform for research scholars, teachers, researchers, and practitioners to share their ideas, research findings, and experiences on various dimensions of Indian knowledge system and holistic education. And the discussions about this today will focus on the philosophical foundations, policy perspectives, curriculum integration, opportunities and challenges involved in implementing Indian knowledge system in our contemporary education system. We are delighted to have
eminent scholars, academicians, and researchers from different part of the country participating in this seminar, and your presence enriches this academic gathering and will certainly lead to meaningful dialogue and intellectual exchange. Total 310 participants have been registered in this seminar, out of which 22 numbers are faculty members, 53 numbers are PhD scholars, 235 numbers are PG students, and demographically participants are from various states like Odisha and other states like Rajasthan, Telangana, Arunachal Pradesh, Jharkhand, and West Bengal. Total 68 abstracted papers have been received, and out of 68 papers, 12 papers are from faculty members of other universities of our state, 10 papers from our university faculty members, and 9 papers from research scholars of other universities, and 44 papers from research scholars of our universities, and 2 papers from students of other universities, and 12 papers from students of our universities. And under the sub-theme, Philosophical Foundation of Indian Knowledge System, 9 papers received. Conceptualization and Holistic Education in the Indian Context, 9 papers received. Policy Framework Supporting Indian Knowledge System, 14 papers. Curriculum Design and Integrations of IPS, 10 papers. And Pedagogical Approaches and Teaching Learning Process, 7 papers. And Challenges and Opportunities of Indian Knowledge System based on Education, 9 papers have been received. And total 5 resource persons have been invited to this 2 days national seminar, representing from different part of our country, different institutions. And I would like to extend my profound gratitude to our esteemed Vice Chancellor, Professor Santosh Kumar Tripathi sir, for his blessings and strong motivations for this quality initiative. I am also thankful, respected Chairman PG Council, Professor Bhaskar Behra, and all the resource persons for accepting our invitations and joining the 2-day national seminar. I sincerely hope that the national seminar, the deliberations, presentations, and discussions during this seminar will contribute significantly to understanding how Indian knowledge traditions can inform modern education practices and support the development of the holistic and value-oriented educations in our state as well as in our country. Before I conclude, I take this opportunity to thank all the members of the organizing committee, faculty members, research scholars, volunteers, and staffs who have worked tirelessly to make this seminar a grand success. Once again, I warmly welcome all the distinguished guests, participants of this national seminars, and wish you fruitful, intellectually stimulating, and memorable seminars. Thank you all. Most esteemed Vice Chancellor and President of this inaugural session, Professor Santosh Kumar Tripathi, esteemed keynote speaker, Professor Kanmacharan Sahu, esteemed guest of honor, Professor Bharat Kumar Panda, convener of this 2 days national seminar and head of the department, Professor Amulya Kumar Acharya, organizing secretary, Professor Jyoti Shankar Pradhan, co-organizing secretary, Dr. Ranjan Kumar Raut, coordinator, Department of IBM, Madam Pratima Pradhan, all esteemed professors, invited speakers, research persons, delegates, research scholars and students of my university. It is a great occasion that Department of Education is organizing a 2 days national seminar on the topic Indian knowledge system and holistic education, policies, challenges and opportunity. I congratulate team member of Department of Education, especially the head of the department, that they are organizing a good seminar
during Odia Paksha, that is Indian knowledge system and holistic education. My sincere thanks to all the research persons and other dignitaries that they have accepted our invitation and joined with this 2 days national conference. I wish all success of this 2 days national conference and the outcome will of course help to the future researchers as well as our students. Once again, I welcome to all and wish a grand success of this seminar. Thank you all. May I now request our guest of honor, Bharat Kumar Ponda sir, to say their valuable words. कर्त्रेति न्यायिका अरहं विद्यथदेन शासनरता करणेति मीमांसका सोऽयं बुद्धधातु वंचितः त्रैलोक्यनाथ। Honorable Vice Chancellor, ये इसीलिए कहना पड़ता है कि एक दो शब्द अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे तो विद्वान नहीं कहलाएंगे। मंच पर विराजमान इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और सभी वरिष्ठ आचार्य, एक शब्द में समाप्त करूंगा। नेशनल सेमिनार है इसलिए हिंदी में कहना चाहूंगा, अन्यथा उड़िया नहीं बोलता। भारतीय ज्ञान परंपरा पर हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस अंग्रेजी को नहीं छोड़ पा रहे। ये कॉलोनियलिज्म जब तक हमसे नहीं जाएगी तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा क्या, हम स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम मूल रूप से तो स्वाधीन हुए हैं 1947 को, अभी भी अपना तंत्र आना बाकी है, अभी भी हमें स्वतंत्र होना बाकी है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा अभी भी हमें लागू करना बाकी है और अपनी ज्ञान परंपरा तो बहुत दूर की बात है। मैं खाली एक छोटी सी इतिहास इसी आधार पर दोहरा देता हूँ। 5 मिनट का समय अभी है और आगे जब हम चर्चा करेंगे उस समय करेंगे। मैं बस इस इतिहास को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब ये एबीपी का प्रारंभ हुआ है 2015 में, जब 1 जनवरी के महीने में कमेटी का निर्माण हुआ कि एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी निर्माण किया जाना है और कस्तूरी रंगन को इसका दायित्व दिया जाता है। उसके बाद इसकी बड़ी चिंता होती है कई लोगों को कि ये एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चिंता, क्योंकि 1986 में भी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी और 1990 आते आते ये न्यू पुराना हो गया। हर नया कुछ दिन के बाद पुराना होता है। हम इधर से थोड़ा, उधर से थोड़ा, थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया से ले लेते, थोड़ी सी कैलिफोर्निया से ले लेते, थोड़ा सा यूएस से ले लेते। वहां क्या अच्छा हो रहा है, वहां क्या अच्छा हो रहा है, इनको लेके नई एजुकेशन पॉलिसी बनाते और फिर कुछ दिन के बाद वो बदल जाते तो हमें बदलना पड़ता है। और इसी बदलाव के दौर में कुछ लोगों को ये चिंता हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो हमारे लिए योग्य नहीं है। तो पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पर दो बातें। एक, कैबिनेट की वो रेजोल्यूशन एन पास हो चुकी है, एनईपी जो होना है वो एन पर होना है। तब कुछ विद्वानों ने सोचा, विचार किया और एन के जगह पर उन्होंने विचार किया कि ये नेशनल किया जा सकता है। लेकिन ये जो नेशनल होगा ये एनसीईआरटी का एन नहीं है, एनसीईटी का एन नहीं है, ये एन वास्तव में भारत की आत्मा होगी। ये नेशनल यानी राष्ट्रीय होगी। राष्ट्र शब्द का अपना औचित्य है, अपनी क्षमता है, अपनी स्वभाव है हर एक राष्ट्र का, और इसी राष्ट्र के स्वभाव, चरित्र, प्रकृति को प्रतिबिंबित करने वाली शिक्षा होगी। तो समय चाहे कितना भी बदल जाए, इस राष्ट्र की आत्मा के साथ जुड़ी हुई शिक्षा, इस राष्ट्र की आवश्यकता के साथ जब चलेगी तब वह शिक्षा स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय होगी, राष्ट्र के लिए होगी, राष्ट्र जीवन के लिए होगी। तब ये एन न्यू से नेशनल में कन्वर्ट हुआ और इसी के साथ मैं अभी की बात को यही रखता हूँ। आगे फिर हम इस नेशनल से भारतीय ज्ञान परंपरा इस एनईपी की आत्मा है, एनईपी का प्राण है। बिना भारतीय ज्ञान परंपरा को समझकर हम एनईपी को नहीं समझ पाएंगे। इस एनईपी की अपेक्षा क्या है? हमारे सामने जितने पॉलिसीज आए हैं
वो केवल जैसा लिखा गया है वैसा नहीं है। इसके नीचे जो अंडर करंट है, इसकी जो आत्मा है, उसको समझने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना बहुत आवश्यक है। आगे भी इस विषय पर चर्चा करूंगा और बाद में भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से होलिस्टिक एजुकेशन क्या है और इसके लिए हमें आज क्या पॉलिसीज लाने पड़ेंगे और हमारे सामने चैलेंजेस क्या है, इस पर बात करेंगे। मुझे मैं कह सकता हूँ अमूल्य जी मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि वी बोथ आर अलुमनाई ऑफ ए स्कूल। हम दोनों ने एक ही विद्यालय में अध्ययन किया, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक बड़े भाई के तौर पर आपसे स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैंने विक्टोरी जी काफी सारी इससे पहले एक बार आया था और दोबारा यहाँ प्राप्त हुआ। बाकी हमारे केसी साहू साहब, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे सिलेक्शन कमेटी में प्रोफेसर बनने में आप निर्णायक रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने का आपका सहयोग रहा है। इसलिए मैं सदैव अपने जीवन भर आपके पास कृतज्ञ रहूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं अवश्य करूंगा, और इसके लिए भी मैं आपके पास आभार व्यक्त करता हूँ। भाई ज्योति प्रकाश जी, भाई रंजन जी, पीजी काउंसिल के जो आचार्य हैं, मैं शब्द आचार्य प्रयोग कर रहा हूँ, इसका भी अर्थ आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। भास्कर आचार्य जी कह सकता हूँ। बाकी हमारी प्रतिमा बहन जी, आप सभी के प्रति कृतज्ञता। मेरे से गलती हुई है, ठीक है, क्या नाम, ठीक है, अच्छा बहन जी कहा इसीलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये हमारी संस्कृति सभ्यता परंपरा है, जिसको कहीं ना कहीं हमें ये सबसे भी हमारे लिए चैलेंज है। इतनी भर बात के साथ आपकी वाणी को विराम देता हूँ, फिर अगले धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiring words. बाद थोड़ा बोलना मुश्किल होता है। भरत बाबू was able to bring a bit of life. We acknowledge the privilege and honor FM University has given me, inviting me to this occasion. I take this opportunity to pay my respect to Honorable Vice Chancellor Dr. Tripathi, Chairman PG Council, my younger brother Amulya, Jyoti, Ranjan and Madam Pratima, and all the esteemed officers of the university, faculty members, participants, organizing team and my dear students. अभी 5 मिनट बोलना है, बाद में थोड़ा लंबा। मैं जब भी इस कैंपस में आता हूँ ना, हमको थोड़ा शांति निकेतन का महसूस होता है। और इससे पहले सार जब वाइस चांसलर के आए इधर फर्स्ट टर्म में, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना आपका कैंपस में, ये जो धानो मीनो पानो है ना, मूवी तब यूनिवर्सिटी पे वाइस चांसलर पे इंटरव्यू देती ओढ़ी की जाउतली यूनिवर्सिटी रो कौन विजन बोली सार को सहित देखाइतला इंटरव्यू समय आमे आसिया पूर्व जे इंटरव्यू वाइस चांसलर इंटरव्यू रे पचेरिबे कोन तमर विजन यूनिवर्सिटी पाई की आमे वेबसाइट खोली के पढुछे बिदाना में आउटसाइडर है ना, सार के भी इनसाइडर। सर आई मस्ट थैंक यू। अपन सर प्रथम एक्सपेरिमेंट करथिले गोटे पेपर रे बाहर थिला जे वाइस फकीरमोहन यूनिवर्सिटी किछि परीक्षा करछि, and I really cannot express my feeling for the first time when I read this thing. It was so close, so similar to the experiment Tagore did 100 years back. I was so keen to find out who is the Vice Chancellor, because we have a bit of experience moving across the country and a bit outside. We hardly find Vice Chancellor really become interested in old things. No? Old, which is old, so-called. You know, old, we people have become old.
Yes or no? So, sir, thank you once again, and I am pretty sure when Vice Chancellor has got the second term, Amulya Babu has already told that the university in the safe hand at least for next 4 years. And such an occasion when this kind of event is being organized, थोड़ा पिला माने गलती करथिले ना वाइस नॉर्मली हमरा वाइस चांसलर माने बोर्ड ताकू ऑनर करिवा फेलिसिटेट करिवा सब बहुत जगह रे सर मु देखिछि बहुत यूनिवर्सिटी रे एठी भी होथिला वाइस चांसलर कहले नै हमकु दे दिबो हम पूरा भारतीय परंपरा पर कहछि अतिथि देव भव है ना अतिथि देव भव it changed it and many more things he had changed in the university. It's not the time to deliberate upon that, but you young students must know hardly there comes a leader in the life of an institution who can have the real vision and who can implement the vision into day-to-day practices, and he is one of that. So I take this opportunity to declare on behalf of you and taking the opportunity, the Department of Education is blessed to have the blessings of Honorable Vice Chancellor. हम एक इंग्लिश में एक लाइन पढ़े थे एक जगह पे जो बेस्ट इज द होम ऑन व्हिच द शेड ऑफ ए ट्री फॉल्स माने सेही घरटा माने सेही घर कोन कहबी ब्लेस्ड माने सेही घर ऊपर आशीर्वाद अछि जो घर ऊपर गोटे गछ छाई पडुछि इट स्पीक्स ए लॉट अबाउट एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी सेही भले गोटे बट वृक्ष जाते पानी दउथि सिंबलिक थिला vice chancellor of such kind of person. आउ जो टॉपिक ऊपर भारतीय ज्ञान परंपरा ऊपर सेमिनार होछि एटा ना एते खाली 5 मिनिट रे तो कहबार अछि मु परे या परे कहबे के डिलिबरेटली मु खाली एई मुहूर्त रे एति कहबी एटा काहे कि आज हम आलोचना व सेमिनार रो विषय होछि धरम कहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी रु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू रु नेशनल ना नेशनल रु न्यू ये जो मूवमेंट है ना इट हैज अ लॉट मेनी स्टोरीज बिहाइंड इट एटा काहे के इज इंपोर्टेंट 300 जो भारतीय ज्ञान परंपरा आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स र सेव के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इंस्पिरेशन रे तीनटा जिंस कहउछन दृष्टि परंपरा और लौकिक प्रयोजन तीनटा जिंस अछि दृष्टि विजन परंपरा कोन भारतर परंपरा भारतीय दर्शन कोन थिला आ लोक मानकर वर्तमान रे आवश्यकता कोन एई तीनटा जिंस को आलोचना कले देखिबो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड इट हैज टू बी डिस्कस्ड आ से ओनली एई परंपरा भितरे तीनटा जिंस को माने एम्फसाइज करछन्ती काहे कि एटा एते इंपोर्टेंट हेछि ना ज्ञान विज्ञान और ए भारतीय परंपरा भितरे ज्ञान विज्ञान और दर्शन माने ज्ञान विज्ञान और जीवन दर्शन अछि एथिपाई की इम्पोर्टेंट बाकी आई एम प्रीटी श्योर टेक्निकल सेशन रे टेक्निकल जिनिस पर काहे की इम्पोर्टेंट से गुटे डिस्कशन होबा दिस एन इनॉग्रेशन सेशन वी कैन नॉट मेक इट लॉन्गर खाली गुटे सरल संपत्र मोर गुटे कथा मने पड़छि हम काहे की भारतीय परंपरा सरल संपत्र गुटे जगह रे साटायर करछन्ती प्रेजेंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को जे गुटे हिंदी रे न्यूज आछि भारतीय प्रधानमंत्री आज भारत प्रत्यावर्तन करछन्ती भारतर प्रधानमंत्री आज भारत प्रत्यावर्तन करछन्ती जदि ए स्पिरिट रे बुझी परिबो भारतीय ज्ञान परंपरा आज सेमिनार हिसाब रे डिस्कशन होबो जाउछ थैंक यू वेरी मच Most revered Vice Chancellor Professor Santosh Kumar Tripathi sir, delegates on the dais and off the dais. So this seminar has been organized by PG Department of Education, Fakir Mohn University. Very timely one. As we know, the Indian knowledge system that reminds us the education is not only about gaining information, but shaping the character, values, and wisdom. And in this connection, and we can say this particular seminar is very important, valid for us, and it will guide us how to implement, direct us how to implement National Education Policy 2020 smoothly in our institutions.
as we are running short of time, and we are waiting for our esteemed Vice Chancellor, Professor Tripathi sir, just to address the gathering. And I wish all the success of the seminar. For the next 2 days, we will discuss, deliberate on this topic, and I am sure it will definitely guide us how to implement the NAP 2020 in future. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. A souvenir is not just a publication. It is a reflection of intellectual spirit and collective academic effort behind the national seminar. May I now humbly request our honorable dignitaries on the dais to kindly release the souvenir. भारतीय ज्ञान व्यवस्था एवं सामूहिक शिक्षण पद्धति उपर आज ये संपाद आयोजन शिक्षा विभाग कर शिक्षा विभाग को धन्यवाद एवं आमर अनुरोध रक्षा कर मंच मुख्य वक्ता प्रोफेसर धनुचरण साहू एवं सम्मानित अतिथि प्रोफेसर भरत कुमार पंडा, अन्यतम सम्मानित अतिथि स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहरा, संयोजक प्रोफेसर अमूल्य कुमार आचार्य, संगठन संपादक प्रोफेसर ज्योतिशंकर प्रधान, अन्यतम संगठन संपादक डॉक्टर रंजन एवं अमूल्य सार जहाँ कहले काटिकी मुझे कहले जदियो प्रतिमा मैडम गला थर संपादन आयोजन दायित्व थे एथर से ना मैं पोस्टल यूटिल देखी प्रथम कमिटर प्रथम सदस्य है डॉक्टर प्रतिमा भाग्यर विडंबना बा अमूल्य सार को आग चला दोष अच्छी घटना आशा रखी मुख्य विभाग मुख्य हिसाब से कथाटा अच्छी गोटे लिखिं धाड़े से इमोशनली बैलेंस मानसिक संतुलन रखी कथबार्ता कले बहुत भल करता कारण आप विभाग मुख्य तरबर में कौन कथा कहवा हृदय में जहाँ भूल संदेश दब एमती कार्यक्रम शिक्षा पाइबा शिक्षादान करने तेणु मो कथा को अन्यथा ने ना शिखापी चेष्टा कर भविष्य में एमती भूल करवा विधेय नुहे तापर विषय को टी आसली कारण विषय लिखिं इंग्राजी 21st century must go beyond academic success to nurture well-rounded individuals who are intellectually capable, emotionally balanced, ethically grounded, socially responsible and spiritually aware. शब्द संयोजना एकदम ध्वनिकर परिचय रिच वर्ड्स आर आर किंतु आमे अभ्यास परिणत कर बोध हुए ये कार्यक्रम से सब बड़ सम्मान ओडिया कहवा गले शैक्षिक सफलता से हम जो व्यक्ति विशेष गुणवत्ता अनुसार निजक सबल कर मानसिक भाव में संतुलित हो पारे नैतिकता आधार में व्यक्तित्व विकास कर समाज प्रति
दायित्वबोध हेबे एवं आध्यात्मिकता ऊपर विश्वास रखिए बा से विषय जानिए मु जानिनी एथि जो विषय आलोचना हेबो तार दिग्दर्शन कुआडे रहे तो आशा करी प्रत्येक छात्र छात्री गवेषक छात्र छात्री एवं अध्यापक अध्यापिका ये सब विषय को निश्चित भाव में ध्यान देवे एवं निजे उदाहरण है अन्य मानक अनुसरण करने का सुযোগ सृष्टि करे। भारतीय ज्ञान परंपरा ऊपर जो आलोचना होची आमे अवश्य मो कथार किसी लोक राजी हेबे कि नहीं जाने इंग्रजी अपेक्षा मातृभाषा व्यवहार करी ओडिया व्यवहार करि पारले बहुत भल। आज सकाळे मैं सर तमे एटी 6 वर्ष रहिलणी जेपर्यंत ओडिया कहून हिंदी बा इंग्रजी रे कथाता कर जेटी को सुन तब तरह से कहला ए एक्सपीरियंस पर्सन यदि ओडिया रे कहिता जने अभिज्ञ लोक बोली कहि पारे इंग्रजी रे कहला सेठी ए आन भीतर बहुत फरक रह गेला से विचार जानि पारे तो निज मातृभाषा यदि कहबा से हिंदी हो माने हिंदी रे कहि पारे कोन माने ओडिया रे कहि पारे कोन ताले भूल होवार संभावना बहुत कम अछि। और द्वितीय कथा हला हम कहा ऊपर आलोचना करछे भारतीय ज्ञान व्यवस्था ऊपर आलोचना करछे जहा भितर हमर पारंपरिक ज्ञान वैशिष्ट्य रखछे एवं जहा हमर पंडा सर कहले जे आमे स्वाधीन हेचे सत आमे किंतु स्वतंत्र हे एतके स्वतंत्र हेने आज जदि खबर कागज पढ़िबा जो मैंने पढ़ी थी जानते इधर बोलते 40 भाग कथा आसी जे महिला स्वतंत्रता आज भी नारी सशक्तिकरण कथा कहला बेले देखिबार अछि प्रकृत रे कोन समाने सशक्त हेचन जदि नुहे आमे स्वतंत्र यदि प्रत्येक नागरिक निज जीवन निज अधिकार निज दायित्व निज उत्तरदायित्व उपलब्धि करूने एवं ताकू निज अभिज्ञता माध्यम रे बुझी पारुने बा काम रे लगेई पारुने ताहले आमे स्वतंत्र हे स्वाधीनता और स्वतंत्रता गोटे बड़ कथा समस्त कहती आमे स्वाधीन अगस्त 15 तारिख रे हम जो स्वाधीनता दिवस पालन करू सेतबेले जातीय संगीत गान सरले आमे भाबो आमे स्वाधीन नै एवं प्रति वर्ष हमको स्वाधीन होबो कैसे पर्व आमे पालन करू आमे यदि स्वाधीन हे जाई थां तो बोधले पर्वटा वर्चुअली पालन करले भी चलतो शारीरिक हिसाब रे पालन दैहिक पालन अपेक्षा वर्चुअली करले चलतो कि सब वर्ष जो पताका उत्तोलन होची समान व्यवस्था होची बोधे आमे एबे भी मने पकई पकई चालिचु जे आमे स्वाधीन प्रति वर्ष हम मन पकई पड़छ स्वतंत्रता बहुत दूर ए जो सेमिनार करा होची भारतीय ज्ञान परंपरा ऊपर भारतीय ज्ञान कोनोसी तुलना रे कम आमे जो कथा जो एस्ट्रोनॉमी आज कथा कहूचे सेटा बोधे सिद्धांत दर्पण रे केते सह वर्ष तले कुहासे भारतीय परिचय आमे जो औषधीय व्यवस्था कथा कहूचे एबे बाहर जी जते एंटीबायोटिक खाइबा तार प्रतिक्रिया रहे किंतु भारतीय व्यवस्था रे बोधे प्रतिक्रियाहीन औषध व्यवस्था थिला जोटा एबे आमे पढिबा को लागू करिया को चेष्टा करू सेंती चिकित्सा विज्ञान कहतु आज बोधे खबर बाहर कल्पक विषय आमर जो परमाणु व्यवस्था अच्छी अणु
व्यवस्था जनित गवेषणा चलुची सेटा आम निज ज्ञान ऊपर पर्यवेसित यूरानियम रो थोरियम जाय नै जो करूथिले बर्तमान आम व्यवस्था रे थोरियम को आउट की सहज केमती हेई परिबो এবং ता कामरे लागबो से व्यवस्था आम कल्पकम अनुविज्ञान क्षेत्र रे सेटा बाहर छै आम व्यवस्था यदि एते प्राधान्य रखुछि ताले आमे काहे से व्यवस्था रे अनुप्राणित न होबा से व्यवस्था को अनुसरण न करू मु भाबुची आजिर जो कार्यक्रम से ता ऊपर निश्चय ध्यान देबो मु काली की पदन कहतुली जले अमेरिका रे टिके बुलिया को सुजोग मिलेला टूरिस्ट हिसाब रे यात्री हिसाब रे गोटे बस रे आमे पाखा पाखी 43 जन लोक थी एवं से 43 भितरु 5 जन भारतीय थिलु बाकी 3-4 जन अन्य देश रे थिले किंतु बाकी सब चाइना रे ये गाइड थिला से जोड़े भाषा रे कहू भारतीय भाषा की कहू से इंग्लिश रे कहूला और चाइनीज रे आमे भारतीयता आज जाए जाहिर करी पारि ना हम संख्या अधिक चाइना ठे बहुत अधिक एमती कि 1/4 रु अधिक किंतु आमे एपर्यंत सक्षम हेनु हमको निजको जाहिर करिया हम स्वतंत्र हेलु केते यदि सेही जिनसटा हेई पारे त हम स्वतंत्र हेई हमको स्वतंत्र होबा पई पड़ी आम परंपरा ऊपर ध्यान देबा पई पड़िबो जहा कथा उठला एटी जो वेल राउंडेड शब्दटा मते भल लागिला ता कारण हला से शब्दटा शिक्षा चरित्र कुशलता और अभिज्ञता ऊपर पर्यवेसित यदि बड़े लोक ये सब को साधन करि परिबो वेल राउंडेड व्यक्ति ही पारे ए कथाटा जेतबेले एठी आलोचना हो मु भाबुछि आमे समस्ते से विषय रे ध्यान सह सुनिबा किछि सिखिबा को चेष्टा करबा एवं संतुलित जीवन जेतबेले आमे आकांक्षा रखिबा तो निश्चित भाव रे हमको ये विषय रे ध्यान देबा को पड़े सर मते टिके तत्ते देले कारण से को कहले कोन ओल्ड शब्दटा बेसी जोरे कहले भाई इंग्रजी तो अच्छी ओल्ड इज गोल्ड इंग्रजी रे ओल्ड इज गोल्ड तो मो मदरे भाई गोल्ड तो तळी ने भांगी मुनी जाय आमे सब हिरा से छोटिया खंडर भी महात्मा अछि एवं आमको प्रतिपादित करिया पड़िबो से छोट खंड हिसाब रे जे आमे केते महात्मा रखुछु वर्तमान करता आमे जमा ओल्ड नु सेमान जदि बयस हिसाब रे पर चुट्टी को देखि भावते ओल्ड बोली मु एबे भी आह्वान देबी जे भाई चलो पड़िया के लियो आमे से ओल्ड जो माने अछंती से माने अभिज्ञता रे पूर्ण से माने शिक्षागत योग्यता हो अभिज्ञता हो मानसिकता हो बा अन्य जे कोनसी क्षेत्र रे निश्चित भाव रे कनिष्ठ गठो वरिष्ठ हिसाब रे बहुत आगे रहे जो कार्यक्रम चलची सेटा जो वरिष्ठ और कनिष्ठ सहयोग भितर चलवा उचित वरिष्ठ को कनिष्ठ शिखिबे कनिष्ठ को शिखेबे और कनिष्ठ वरिष्ठ को मध्य किछि शिखेबे इंटरैक्शन पारस्परिक ज्ञान आदान प्रदान भितर एटा होबा उचित मोर आशा रहिबो पिला माने खाली बसिकी टिफिन खाई लंच खाई संग संग भितर गपसप मारी सेमिनार के उठे रज उत्सव भलिया नने से शिक्षा उत्सव भलिया नेले बहुत भलो कारण एठी जेति की बसचंदी सारे भविष्य रे विद्यालय रे हो महाविद्यालय रे हो बा विश्वविद्यालय रे शिक्षकता करे शिक्षकतार महत्व बुझिबा दरकार जे भलो सुने से भलो शिखे जे प्रश्न पचारि जाने
से भल शिक्षक, जे आलोचना करी जाने से भल शिक्षक। एतिकी मन रखियो एवं ये कार्यक्रम को तमर प्रश्न जरिया सफल करियो बोली आशा करछि। कारण कौन कार्यक्रम सफल हुए ना जो से एक पाखे एटिक आसबे ठिया हेबे वक्ता रे पढ़िबे पळे तापर आमे सब भूली ए विषय महात्मा को देखिले आमे भूलिबा उचित। सेतुई मोरे अनुरोध टिक रखियो बोली भाबुची। जाने सर आम पिला जो कहली सुना निराश निश्चय शुणे कार्यक्रम सफल करियो संभव। पंडा साहब कथा बोलू ए वर्षर कार्यक्रम रहिबो आमे ए कथा को सम्मान दे जो पद पदवी सब अच्छी ताकू विधि विधान अनुसार हम ताकू बदलैया चेष्टा एक्ट ऑफ स्टैट्यूट को लेकर बदलैया चेष्टा करू। कूल प्रति रहिबो नहीं प्रति बहुत जघन्य शब्द कूल गुरु रहिबो एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर हायरार्किकल जो अरेंजमेंट अच्छी ताको आचार्य रे सीमित रखिबा एवं अध्यापक अध्यापिका रे सीमित रखिबा से व्यवस्था करिबा जते दूरत्व कमेबो सेते ज्ञान वितरण सुविधा। हम भाबुची सरकार एवं ये संपादन सफल हो सेती आशा करूची। बहुत धन्यवाद। Sir, I am extremely sorry for my mistakes, and also I want to give you thanks for your valuable and inspiring words. It is time to express our sincere gratitude to all who contribute to this success. So, I kindly request our joint organizing secretary, Dr. Ranjan Kumar Raut sir, for a vote of thanks. Very good afternoon to one and all. आज समस्त प्राय ओडिया आज आम समस्त सार मत अनुप्राणित हो गले जे ओडिया कहला प्रथम कानून सार स्टार्ट करदे ओडिया तापर हम भाई चांसलर सार मत ओडिया कहले जदिओ नेशनल सेमिनार किंतु ओडिया पक्ष चली एवं आम ज्ञान परंपरा कथा कहउछन सेही परिप्रेक्षी रे वर्तमान हम धन्यवाद करब। मु जदिओ भाबिथिली इंग्रजी कहि किंतु नाही ओडिया शिफ्ट करदिला आमे ज्ञान परंपरा कथा कहला तेणु यही परिप्रेक्षी मोर खाली धन्यवाद देवा पूर्व मु भाविली धन्यवाद देवा पूर्व यही अस्मिता विषय गोटे पद मु माने आवृत्ति करी जोटा भावी काली आवृत्ति करी से भावी आज रही हो परिवर्तनशील दुनिया रे विवर्तन बादर गही दे परिवर्तनशील दुनिया रे विवर्तन बादर गही दे मानववादर रंगशाला रे विचित्र बनाए सभ्यता परिवर्तनशील दुनिया रे विवर्तन बादर गही दे मानववादर रंगशाला रे विचित्र बनाए सभ्यता गोठ छड़ा नीलवर्ण सुगाळ सम गोठ छड़ा नीलवर्ण सुगाळ सम आपणा को आपे संस्कृतिर बाहक साजी अपसंस्कृतिर दीतिभूमि उपरे पासोरी देइछि से स्मृति विजा अतीतर सेही मनीषी गणक वेद मंत्र सेही मनीषी गणक वेद मंत्र श्रृंखलित जीवन शैली को समय हाथ रे बंधा पकाई श्रृंखलित जीवन शैली को समय हाथ रे बंधा पकाई पासोरी देइछि प्रीति मैत्री संगतिर मधुर मूर्छना प्रीति मैत्री संगतिर मधुर मूर्छना यदि आध्यात्मिक मिलन पर यदि आध्यात्मिक मिलन पर कामना वासनार स्वर झंकार बुभुक्षी जनतार छाती पर गीतशाली निर्मम प्रहार शोषण कषणर चारिकांत मध्य अणनिश्वासी मनीष मानक विकल क्रंदन अबा विभीषिका द्रौपदी मानक आर्तनाद अबा विभीषिका द्रौपदी मानक आर्तनाद नारी सशक्तिकरण स्लोगान सुनी सफेद पताका तले नवकुसुमित कलिका मानकर हुए आत्मविसर्जन
नवकुसुमित कलिका मानकर हुए आत्मविसर्जन प्रभात पुरुषों प्रतिमूर्ति रे फूलमाला लंबाई प्रभात पुरुषों प्रतिमूर्ति रे फूलमाला लंबाई साम्यवाद गुरु मंत्र गाई समाजवाद रणहुंकार प्रकलित वसुंधरा समाजवाद रणहुंकारे प्रकंपित ये वसुंधरा हेले एटी सबु मरिमरिचिका हेले एटी सबु मरु मरिचिका उत्कलीय भाषा संस्कृतिर कागज पिठिरे उत्कलीय भाषा संस्कृतिर कागज पिठिरे पाश्चात्य सभ्यतार रंग बळी इंद्रधनुर भ्रम सृष्टि करी बुझी पारे ए सभ्य जाति नुहे एहा जातीयता नुहे एहा देशप्रीति अपहंच इलाका पथे यह मात्र व्यर्थतार गति और प्रगति यह मात्र व्यर्थतार गति और प्रगति शेषे आसहे आर्यसुत केजी दुर्गम बंधुर पथ लंघी कालीमार कालस्रोत लेखि चाल इतिहास ये जातिर संस्कृति और परंपरा शासन निर्यास ये जातिर संस्कृति और परंपरा शासन निर्यास धन्यवाद परंपरा कथा उठिला समस्त अतिथि को सुनी दी नहीं ये कविता निहाती न कहले रही पारि वर्तमान धन्यवाद प्रकारे प्रथमे धन्यवाद देवी ये मंचर आमर कुलपति कुल आचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सर जहाँ मार्गदर्शन रे आमे प्रोग्राम करिया पे सब आमे प्रोग्राम करिवा पई आगबर हेलु एवं ये प्रोग्राम आज करू एवं तापर धन्यवाद देवी आम अनुष्ठान स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहरा सर जहाँ दिव्य दर्शन जो ये कार्यक्रम सफल होती तत्परे मु धन्यवाद देवी विश्व भारती वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर कान्हूचरण साहू सर जहाँ ये मंच उपस्थित आम मान को प्रेरित करी एवं दिग्दर्शन आम यही जो संपादन को आहरी उन्नत करिबो तत्परे धन्यवाद देवी आमर प्रोफेसर भरत कुमार पंडा सर जे आमर केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा रे प्रोफेसर भाव में कार्यरत अछंती तांकर दिग्दर्शन आमको निश्चित भाव में आम कार्यक्रम सफल कराइबो तत्परे आम विभागीय मुख्य एवं आमर ये विभाग ये संपादन सेक्रेटरी प्रोफेसर ज्योतिशंकर प्रधान सर एवं प्रतिमा मैडम एवं समस्त मान्यगण्य व्यक्ति एवं समस्त शिक्षार्थी एवं पार्टिसिपेंट समस्त धन्यवाद दे रहू थैंक यू Thank you, sir, for your valuable speech. With profound respect, I humbly request our Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly declare the session to conclude.